स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर एसबीबीजे के श्री रमेश भटेजा जी ने एक मैसेज शेयर किया। आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम रिटायरीज एक्स ग्रेसिया का वेट कर रहे हैं और कल 13 फरवरी था, बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बारे में डिस्कशन था और ये बड़ी उम्मीद थी कि हो सकता है एक्स ग्रेसिया के बारे में कुछ आउटकम आए। डियर पेंशनर फ्रेंड्स, एज all the pensioners were eagerly waiting for the some decision on pensioners issue of ex gratia, although it was neither our demand nor any provision of the such ex gratia in our pension regulations, but it was mentioned in the MAU that ex gratia will not affect our demand of updation on lines of RBI. Again on 13 February 24, the final BP bipartite settlement was not signed and left undecided for indefinite period. Now the unions say that they will not sign the BPS till 5 days banking is not decided. A few days before, it was told by unions that government has cleared this demand, but now it is said that it is still being discussed. After all, what is factual position for not signing the 12th BPS? Nobody knows the actual reason. Our pensioners say that the stay petition filed by Sri Basant Bankude has blocked their path to sign. The next tentative date for hearing in Supreme Court in MC Singla case is 1st March 24. We cannot say whether the date will be further postponed or not. Only we can hope and wait till 1st March. Friends, every time the unions plays with our sentiments, they are not having any consideration for the financial condition of the pensioners. Now we should understand that the UFBU is not in a strong position to get 5 days banking for their members. Then what they will do for the pensioners? CHB and his stooges every time prove that they are not honest to the pensioner demand. So in future, we should not look forward then. It is our misfortunate that we have to fight for a justified demand and UFBU IBA governments are cheating us. Actually, it is the responsibility of the banks to take decision as per Pension Regulation 1995. They should understand that the pensioner issue does not fall within the purview of bipartite settlement negotiation. The banks are committing a financial crime by denying and delaying pension updation. I know only Supreme Court will decide the matter, which may be on 1st March or some other date. Thanks, Ramesh Bhateja. फ्रेंड्स, बात 5 डे बैंकिंग की, बाइपार्टाइट की और पेंशन एक्स ग्रेसिया की। 13 फरवरी को कुछ भी नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, क्योंकि किसी यूनियन ने अपना मुंह नहीं खोला है। 5 डे बैंकिंग, ये सच है कि अभी डीएफएस के पास पेंडिंग है। सो अनाउंसमेंट जब तक नहीं होता है तब तक कोई कुछ नहीं सकता। और रह गई बात कि यूनियन इस बात पर एडामेंट है कि 5 डे बैंकिंग नहीं होगा तो बाइपार्टाइट नहीं होगा, लेकिन यूनियन भी जानती है कि उनके पास 6 महीने का वक्त है एमयू से लेके अगले 6 महीने तक। अदरवाइज जो एमयू साइन हुआ है वो साइन इनवैलिड हो जाएगा। सो इनके पास वो 6 महीने का वक्त में चाहे वो जो कुछ भी करा लें। देखिए आगे क्या होता है, हम डीएफएस का क्या रुख है 5 डे बैंकिंग में, आईबीए क्या करती है बाइपार्टाइट में। सो आने वाले नेक्स्ट डेट क्या हम फिर से वेट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।